डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया था और इससे मेनली टू कंडीशंस को अपने को कंसीडर करना है। एक कंडीशन है जब टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट हैव आर इन रिलेटिव मोशन, और एक कंडीशन होगा जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन इवन दो some force is applied on that object. So there are two situations, one is static and another is kinetic. This is called static friction and this is called kinetic friction. We all are knowing that this static friction may be zero or at max this mu s into normal force n. But in the case of kinetic friction, the kinetic friction is always same, and that is mu k into normal force. And in general, or in fact always, mu k is always less than mu s. So let us solve some problems to understand all these concepts. Let us see this problem. A block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with a horizontal. Starting from rest, it covers 8 meters in the first 2 seconds. 8 meters in the first 2 seconds. This will help us in calculating the acceleration. Now we have to identify what is the coefficient of kinetic friction, because there is relative motion. This is the situation of kinetic frictions. So let us draw the situation. The inclined surface is like this. This is making 30 degree with horizontal. The object may be like this at this position, and it is moving 8 meters on this inclined surface in 2 seconds, starting from rest position. There is written starting from rest. I mean at this position u is equal to 0. So let us draw the free body diagram. So this is our object and this is this inclined surface. Now there will be force due to gravity that is always towards downward, and let us divide into two parts. In the normal direction of the surface, inclined surface, and in the parallel direction of the inclined surface. So this will be mg cos 30 degree and this will be mg mg sine 30 degree and this will be mg cos 30 degree. Now this object is coming downward, then we have to take the friction in the upward direction. This is f, and this f is equal to will be, because there is relative motion between the surface and the object, so this f will be mu k, and this is normal force. This is our normal force, and this normal force is equal to mg cos 30 degree because there is no motion between in this normal directions. So this is mu n is equal to mu k mg cos 30 degree. So this is our situation. Now what will be the equations? Like this will be mg sine 30 degree minus fk is equal to ma. Now we are already knowing the what will be the a. So we have given some preconditions, like it is moving 8 meters in 2 seconds along the inclined surface. So let us use
x, sorry, x is equal to ut plus half at square. Now this ut is u is 0, so this term will be 0, and from this we will get a is equal to 2x upon t square. Here 2x is 8 meter, t is 2 seconds, so this will be 4 meter per second square. So just we have to put the values mg sine 30 degree minus mu k mg cos 30 degree is equal to 4 meter per second square. So this mu k is equal to mg sine 30 degree minus, this is 4 into mass m into mg cos 30 degree. These all m are out, so we will have g sine 30 degree minus 4 by g cos 30 degree. Now let us see the second problem. The angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. So that if lambda is the angle of friction, mu the coefficient of static friction, then lambda is less than equal to tan inverse 1 mu. So is the concept of angle of friction. Let us see that one object is lying on the surface and there will be some friction force like F. Let us assume that some force is applying in this direction. So it is trying to push in this direction. So friction will oppose this applied tendency of motions in this direction. Now this object will have some mass. तो इसका नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा mg और इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लगेगा n. तो n और f, ये नॉर्मल फोर्स और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों ही कांटेक्ट फोर्स होते हैं, ये हम लोगों ने पहले समझा था. अब ये n और f का कोई रिजल्टेंट होगा. So this is resultant contact force. This is resultant contact force. Now according to the definition of this angle of friction, this is angle between resultant contact force like this and the normal force. This is normal force. So this angle is called angle of friction and taken symbol as lambda. So this is angle of फ्रिक्शन. ये जो नॉर्मल फोर्स है और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, इस दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया. अब हमारा जो कंडीशन है वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट और इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, and this is nothing but static coefficient of friction, static. So this is mu. Now let us see that what is the value of friction. So static friction is always less than equal to mu n. Now let us see what is the relation between this angle of friction and this normal force and friction force. So this is F, we can consider this like F. So tan
lambda is equal to f by n. Now if we take this, if f will go, f बढ़ेगा तो ये जो tan lambda है ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चूंकि f का रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू म्यू n, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan lambda is less than equal to mu n upon n, and that is mu. So overall tan lambda is less than equal to mu, and the same thing can be written as lambda is less than equal to tan inverse mu. So in this way we have achieved our goal. A block slides down an inclined surface. A block slides down inclined surface of inclination 30 degree. So this is our inclined surface with inclination 30 degree. One block is sliding down along the surface. Okay. ये जो ब्लॉक है यह inclined surface के along slide कर रहा है. Starting from rest, that means u is equal to 0. Now a body of mass 2 kg is lying on a rough plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block move up the incline and down the incline. So what is the situation? We have one inclined surface with angle of inclination 30 degree. An object of mass 2 kg is there on the inclined surface. Okay. Initially it is in the rest condition. कोई मोशन नहीं हो रहा है. अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो ये रफ सरफेस है, तो इसका सिचुएशन क्या होगा, इस पर जो है एक mg लगेगा. mg ऑलवेज लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगना ही लगना है. अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और दूसरा पैरेलल डायरेक्शन में. दिस विल बी mg cos 30 degree, this will be mg sin 30 degree. तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि ये नीचे की तरफ टेंडेंसी होगा. तो इन जनरल फ्रिक्शन किधर रहेगा, इन जनरल फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है ये ऊपर की तरफ, ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रहेगा. ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही रहेगा, एक पॉसिबिलिटीज है. अब मेरा टारगेट क्या है कि हम अप द इंक्लाइन, ये जो बॉल है इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, अप द इंक्लाइन. तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स हम इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा है. तो उस कंडीशन में ये जो फ्रिक्शन है वह फ्रिक्शन हट जाएगा और उस फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा. ये मोशन पे, फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन पे डिपेंड करता है, या टेंडेंसी ऑफ मोशन. तो हमारा टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है, उसको ऊपर की तरफ लगा करना चाह रहे हैं. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस पे आपका एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg sin 30 डिग्री लग रहा है और फ्रिक्शन भी आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है. बाकी
इसके पैरेलल जो है वो mg cos 30 डिग्री लगेगा, जो कि इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स n लगेगा। ठीक है, तो n की वजह से n इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। नाउ दिस fs इज लेस देन एंड इक्वल टू mu s n। Let us write down the equation. F minus mg sin 30 degree minus fs is equal to 0, क्योंकि अभी मोशन नहीं हो रहा है। जब फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसको और यदि बढ़ाया जाए तो ये और बढ़ेगा, और ये अपने लिमिट में चला जाएगा, म्यू एस एन के लिमिट में चला जाएगा। और इससे ज्यादा यदि हम लोग बढ़ाएंगे, इसके बाद भी यदि बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, तब हमारा एक टर्म आ जाएगा एम ए। तो वी आर जस्ट रीचिंग एट दिस पॉइंट कि वहां पे म्यू एस एन हो जा रहा है, उससे ज्यादा जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलते हैं। तो एफ माइनस एम जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एस एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री प्लस म्यू एस एम जी कॉस 30 डिग्री। तो हमें इतना फोर्स चाहिए, मिनिमम इतना फोर्स चाहिए अप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। तो अपवार्ड मूव करने के लिए हमको इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द सिचुएशन अपवार्ड। अब इसको हम लोग डाउनवर्ड की सिचुएशन में देखते हैं। डाउनवर्ड की सिचुएशन में तो देखो, डाउनवर्ड की सिचुएशन में क्या होगा कि एक तो ऑब्जेक्ट, डाउनवर्ड सिचुएशन में क्या होगा, ये फ्रिक्शन जो है वो अप की तरफ रहेगा, और एक तो आपका एम जी साइन थीटा तो इस पे लग ही रहा है। ठीक है, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट। अगर मान लो कि एफ की वैल्यू इस एम जी साइन 30 डिग्री से, एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वह ज्यादा होगा, तो ये मूव नहीं करेगा। उस कंडीशन में एक फोर्स आपको बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा, एफ डाउनवर्ड इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ डाउनवर्ड प्लस, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलते हैं, तो एफ एस माइनस, सॉरी ये एफ एस माइनस होगा ना, दिस एफ एस इज माइनस, एफ एस माइनस होगा और ये प्लस होगा एम जी साइन 30 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो अभी एक्सेलरेशन शुरू नहीं हुआ है तो 0 ही रहेगा। तो ये एफ डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एम जी कॉस 30 डिग्री माइनस एम जी साइन 30 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, दैट मीन्स कि ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू इस mg sin 30 डिग्री से कम आता है, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन करना शुरू कर देगा। उस कंडीशन में एफ डी बराबर 0 हो जाएगा। और यदि इन केस इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से कम होता है, उस कंडीशन में हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब किसी इंक्लाइन के डाउन द इंक्लाइन अगर हमको मोशन करना पड़ा तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 भी हो जाएगा, तब भी मोशन शुरू हो सकता है। लेकिन अपवार्ड करने के लिए हमको कुछ ना कुछ फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।